अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। नाउ टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पार्ट 3 ऑफ पॉइजनस प्लांट्स। सबसे पहले द प्लांट वी गोइंग टू स्टडी इज हेमलॉक। ये इसकी हेमलॉक का पिक्चर दी हुई है कि ये प्लांट कैसा होता है और उसके फूल कैसे होते हैं। साइंटिफिक नेम और बोटानिकल नेम इज कोनियम मैकुलेटम। कॉमन नेम हेमलॉक, पॉइजन हेमलॉक, डेवल्स ओरेज, फैमिली एपियासी। पॉइजनस पार्ट्स होल प्लांट, प्लांट का कोई भी पार्ट जो है उसका तमाम पार्ट जो है वो पॉइजनस है। मॉर्फोलॉजी, fruit is about 3 mm, that is 1 by 8 inch long, broadly ovate, laterally compressed, grayish green, often divided into the two mericarps, each with 5 crenate ribs without oil tubes and containing a seed which is grooved on the face. Odor and taste slight. It is a herbaceous biennial plant that grows to 5.5 to 2.5 meters or 5 to 8 feet tall with a smooth green hollow stem, usually spotted or streaked with a red or purple on the lower half of the stem. This is the morphology of this plant. Chemical constituents. The active principles of conium are the alkaloids, of which 5 have been identified, that are: number 1, conine, identified with conicine and secotine; conhydrine, discovered by Worthing in 1856; pseudoconhydrine, isolated by E. Merck in 1891; methylconine and ethylpiperidine. Poison. Conium contains the piperidine alkaloid conine and N-methylconine, conhydrine, pseudoconhydrine, and gamma-conicine or G-conicine, which is the precursor of the other hemlock alkaloids and are the cause of poison. Poison mechanism. Chemical structure of conine. Conine has a chemical structure and a pharmacological property similar to nicotine. Conine disrupts the workings of the central nervous system through action on nicotinic acetylcholine receptors. ऑलरेडी आप लोग इस चीज़ को काफ़ी डिटेल के साथ निकोटिन के बारे में पढ़ चुके होंगे एएनएस के अंदर कि निकोटिन कैसे काम करती है, तो ये भी उसी तरह ये ड्रग काम करती है। Uses. Despite serious safety concern, hemlock leaves, roots and seeds are used to make medicines. It is used for breathing problems including bronchitis, whooping cough and asthma, and for painful conditions including teething in children, swollen and painful joints and cramps. These are the pharmaceutical or medicinal uses of this plant. Hemlock is also used for anxiety and mania. Other uses include treatment of spasm tumors, tumors का spasm हो जाता है उसके लिए, skin infections, epilepsy, Parkinson disease, Sydenham's chorea, and bladder infections. Hemlock has also been used to reverse strychnine poisoning. क्यों? इसकी वजह है कि ये रिवर्स करती है तो इफेक्ट है उसका स्ट्रिक्निन। नेक्स्ट प्लांट एट्रोपा बेलाडोना। इसको आपने पढ़ा होगा, एट्रोपिन, हायासामीन, हायासीन वगैरह ये इसी प्लांट से लेते हैं। ये इस प्लांट का जो है वो इमेज है या फोटो कह लें। इसके अंदर उसके लीव्स कैसे होते हैं, फ्रूट कैसा होता है, उसके फूल कैसे होते हैं। ये प्लांट है एट्रोपा बेलाडोना। बोटानिकल नेम एट्रोपा बेलाडोना, कॉमन नेम डेडली नाइटशेड बेलाडोना। ये दोनों नाम है इसके। फैमिली सोलेनेसी। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्टर्न एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ द कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स स्कोपोलामीन, हायासीन जो कि मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। टॉक्सिक मैकेनिज्म के हाउ इट प्रोड्यूस टॉक्सिसिटी। द एक्टिव एजेंट्स इन द बेलाडोना एट्रोपिन, हायासीन को दूसरा नाम स्कोपोलामीन है, एंड हायासामीन हैव एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज।
The plant's deadly symptoms are caused by atropines, disruption of the parasympathetic nervous system's ability to regulate involuntary activities such as sweating, breathing and heart rate. यानी कि ये ड्रग क्या कर देती है, एस्टेटकोलिन की जो एक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या इनवॉलेंट्री जो हमारी मूवमेंट एक्टिविटीज है बॉडी के अंदर, उसके अंदर एस्टेटकोलिन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो उसको ये जो है वो जो रेगुलेशन है उसको डिस्टर्ब कर देती है, जिसके अंदर मेजर स्वेटिंग, ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट है। आपको पता है कि एस्टेटकोलिन हार्ट रेट को कंट्रोल करती है, तो ब्रीथिंग के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये उसके एक्शन को ब्लॉक कर देती है। द एंटीडोट फॉर belladonna poisoning is physostigmine or pilocarmine, the same as for the atropine। ठीक है जी, जो यही एट्रोपिन के भी एंटीडोट हैं और यही इसके बेलाडोना के भी एंटीडोट हैं। टॉक्सिक पार्ट जो हैं इसके क्या है, दैट इज फ्लाइएज एंड berries. The consumption of the 2 to 5 berries by a human adult is probably lethal. Ingestion of the single leaf of the plant can be fatal to an adult। यानी कि एक पत्ता जो है उसका भी काफ़ी सीरियस है, ये जो है ना पॉइजनिंग कर सकता है। और इसी तरह 2 से 5 जो बेरीज हैं इसकी, अगर वो ह्यूमन एडल्ट ले लेता है तो दैट्स ए लीथल, जानलेवा हो सकता है। यूजेस, it is used previously in cosmetic. The common name belladonna originates from its historic use by women. Belladonna is Italian for beautiful lady. Drops prepared from the belladonna plants were used to dilate women's pupils, an effect considered to be attractive and seductive। यानी कि ये इसके ड्रॉप्स यूज होते थे और औरतें डाल लेती थी आंखों में, जिसकी वजह से पीपल डायलेट हो जाता था और जो औरतें वो खूबसूरत नजर आती थी, उनकी आंखें अट्रैक्टिव और सिडक्टिव नजर आती थी। मेडिसिनल यूजेस, ए पेन रिलीवर, मसल रिलैक्सर, एंटी इन्फ्लेमेटरी टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर डिजीज, हिस्टामिनिक रिएक्शन एंड मोशन सिकनेस। इस पर्पस के लिए ये जो एट्रोपिन स्कोपोलामीन यूज होती है। नेक्स्ट प्लांट एकोनिटम नेपिलस, इसका बोटानिकल रीजन भी है, उसका प्लांट का नेम भी है। ये इसकी फोटोग्राफ है, ये इस तरह का प्लांट दिखाई देता है, इसके बड़े खूबसूरत पर्पलिश फूल हैं। बोटानिकल नेम Aconitum napellus, common name monk's foot, aconite, wolf's bane, fusy, monk's blood, family Ranunculaceae. Chemicals, they contain the chemical alkaloid aconitum, mesaconitum, hyperconitum and jesaconitum, which are highly toxic. Poisonous mechanism of aconite. Aconite containing aconitum is a potent neurotoxin that opens sensitive sodium channels. It increases influx of sodium through these channels and delays repolarization, thus increasing excitability and promoting ventricular dysrhythmias. Especially अगर ventricular dysrhythmias हो जाता है तो it's a fatal और डेथ हो सकती है उससे, इसलिए इस तरह ये पॉइजनिंग कॉज करती है। यूजेस, नो मेडिसिनल यूज, ऑर्नामेंटल प्लांट, यानी कि घरों में सजावट के लिए और सीजनल प्लांट के तौर पर यूज होता है, इसका मेडिसिनल यूज कोई नहीं है। Thank you very much. This is all about this part of lecture. Thank you very much.